अगर लोगों ने एक्सरसाइज ठीक से करनी शुरू कर दी और खाना ठीक से खाना शुरू कर दिया 90% क्लिनिक्स बंद हो जाए। तो होता है रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, इससे ये नुकसान हो जाएगा, चाय कॉफी। अगर हम रोटी चावल नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? This person is now eating chola bhatura and he is very happy. So he's gone from not even having a grain of gluten in his house to now eating chola bhatura. I have won at life. आजकल 40 से कम वालों को ही कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। I mean, Dolo was the most prescribed medicine in COVID. I was traveling recently and I got my menses in a foreign country and I was like, shit, अब क्या? इंसोम्निया सबसे बड़ी बीमारी है, बट इंसोम्निया में अगर हम स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी चीज है, एंड देन उसकी आपको हैबिट हो जाती है। Homeopathy is not slow. Your homeopath might be slow. जो हम एंटीबायोटिक्स जल्दी जल्दी खा लेते हैं सो बैड, वो भी एक रीजन है कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम ये होती है, हम इम्यूनिटी जब डेवलप हो रही होती है ना, बच्चे की हम डर जाते हैं, ये बार बार बीमार कर रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है। ओवर कंजम्पशन ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज कैन लीड टू नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट आयुषी और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में और कैसे आज की मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी के जरिए। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आज, उनका मैं आपसे इंट्रो कराती हूँ। सो वी वेलकम ऑन द शो डॉक्टर तानिया बख्शी। थैंक यू आयुषी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। और डॉक्टर तानिया जो है, शी इज़ एन MD मैक्सन होम्योपैथी में, एंड ऑल्सो शी इज़ अ रिसर्चर एंड बहुत सारी हर्बल रेमेडीज से इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हैं एंड बहुत सारे जो इनके पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया है। तो हम भी आज बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं आप। Thank you. Apart from that, adding 2 cents to what Ayushi said, thank you for welcoming me and having me on this show. अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं एंड लड़कियों का शो होता है, तो आई थिंक 4 चांद लगा देता है and can't wait to begin. शब तो सबसे पहले हम होम्योपैथी की बात कर लेते हैं। बचपन से हम सबने कभी ना कभी होम्योपैथी की दवाइयाँ खाई है और अभी भी हम कभी ना कभी उसको लेते ही रहते हैं। बट एक होम्योपैथी और एलोपैथी, इनके बीच में एक कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट भी मैं कहूँगी चलता ही रहता है। तो ये क्यों है इतना कन्फ्यूजन इसके बीच में, एंड कैसे अलग अलग तरह से ये दोनों चीज़ें काम करती है? आयुषी, कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं है, कोई भी साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं मान सकते आज के टाइम पे, बिकॉज इन कोविड वी रियलाइज दैट। हम घर में काढ़े भी बना रहे थे, आयुर्वेदा भी ले रहे थे, होम्योपैथी भी ले रहे थे और एलोपैथी ट्रीटमेंट भी ले रहे थे अगर किसी को कोविड हो जाता था। एंड दीज थिंग्स वर कंबाइंड। नोबडी जस्ट डिड वन थिंग कि आज सप्लीमेंट ले लिए काउ खत्म। एंड देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस व्हिच शो अस दैट नो साइंस इज कंप्लीट। सो बी इट होम्योपैथी और एलोपैथी, इन सब में लिमिटेशंस है और कहीं ना कहीं इनके एडवांटेजेस और ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं। अब होम्योपैथी बहुत अच्छी साइंस है क्रॉनिक डिजीजेस के लिए, इनका प्रॉब्लम्स के लिए, सोराइसिस, एक्जिमा के लिए। हाल ही में मैंने ठीक किया हुआ था अभी ग्लूटेन एलर्जी के लिए और डेयरी मिल्क एलर्जी के लिए। एंड इस चीज़ के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट नॉर्मल पेन दर्द हो गया, हेडेक हो गया, कोल्ड का फीवर हो गया। पर जहाँ बात आ जाती है इमरजेंसी की, हार्ट अटैक हो रहा है या इमरजेंसी ऑक्सीजन इंटरवेंशन चाहिए या इमरजेंसी सर्जरी चाहिए या कोई फ्रैक्चर हो रहा है, उस टाइम एलोपैथी शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। वी कांट थिंक कि फ्रैक्चर्स में सिर्फ होम्योपैथी काम करेगी। इट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री साइंस देयर। आई कैन थिंक समथिंग वेयर इट कैन एड योर हीलिंग, बोन्स जोड़ने में हेल्प कर सकता है, बट कहीं ना कहीं इट विल नॉट fix it immediately. You have a fracture, fragments है, immediately hospital जाओ. They'll give you rehabilitation, they'll give you fracture, proper therapy, everything, so that your joints at least are joined again. जो fracture हुआ है, जो भी ligament या आपका ligament rupture हुआ है या अगर आपकी bone में कोई fracture आया है, चाहे वो stress factor ही क्यों ना हो, stress fracture ही क्यों ना हो, something like that. The whole idea is that emergency care is best in allopathy. You can't compete with that. And no science can compete with that. Naturopathy can't compete with that. With the emergency use of allopathy, homeopathy can't. Ayurveda can't. So we should understand that allopathy and homeopathy में ये सबसे बड़ा difference है. And allopathy itself is more about emergency treatment. It's more about extreme conditions where you have to do nothing else but go to the hospital. These could look like heart attacks. These could look like fractures. These could look like acute food poisoning when you are dehydrated. These could look like dengue. Acute dengue हो रहा है आपको और हर जगह से हेमोप्टिसिस हो रहा है, blood निकल रहा है, मलेरिया हो रहा है, which is all signs of basically blood getting out of the body. You cannot think about just homeopathy there. I've seen various people, even in
ब्लड शुगर लेवल्स हाई नहीं बढ़ चुके हैं, लाइक बिल्कुल इतने बढ़ चुके हैं कि डैमेज हो जाएंगे किडनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डैमेज हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द वाइटल लेवल विल गेट डैमेज एट दिस हाई ब्लड शुगर लेवल. एंड आई सीन सम पीपल इसे होम्योपैथी लेते हैं उतनी हाई डोज में. आप सिर्फ होम्योपैथी से काम नहीं चला सकते. आई हैव टू पुट हिम ऑन एलोपैथी देन जब हाई डोज हो. नॉर्मल मैंने रिवर्स करी है डायबिटीज, नॉर्मल डायबिटीज थोड़ी बढ़ गई, सर्टन पॉइंट्स आई रिवर्स्ड इट. आई एम ऑल्सो गिविंग मेडिसिन फॉर बीपी. और यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर बीपी की केयर में आप मेडिसिन ना लो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, स्ट्रोक और हैमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच लीड्स टू इंस्टेंट डेथ. And these things you must know as people that homeopathy is not like कि acute emergency है जहाँ पे जी BP shoot up हो गया है और आपको बिल्कुल कुछ नहीं लेना, होम्योपैथी पे आना है. That might not be the rightest thing to do. Ethically as a doctor मैं नहीं बोलूँगी, because उस टाइम पे वो patient literally death bed पर भी जा सकता है. So that हम ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से ये बेटर है. वी कैन गो टुगेदर. yeah. एंड फॉर इमरजेंसीज हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए. Yes, in emergency you must take an allopathy treatment. Like if you have food poisoning and you need emergency healthcare management, go to a hospital. You can't think about that. But allopathy की limitations भी हैं. Abuse of allopathy medicine is the biggest limitation of allopathy today, I feel, in my opinion. Abuse of antibiotics. Fever हुआ, we just discussed this. Fever हुआ, the first prescription was antibiotics. And I know for a fact that antibiotics will also ruin this person's gut. So I'm trying to prevent that. And उसको अभी नहीं पता लगेगा, थोड़े टाइम बाद पता लगेगा जब रिपीटेडली बीमारियां आती रहेंगी. And the problem is abuse of medicines in allopathy. That's the biggest problem in allopathy today. Where people don't realize सर दर्द हो रहा है, let's pop in a painkiller. You know? I mean, Dolo was the most prescribed medicine in COVID. It was the most prescribed medicine. I will not say allopathy was not life-saving when it came to COVID. Doctors struggled. They are struggling with loss of all their own family members. I've seen enough to see that very clearly, be it homeopathy or allopathy. But I will say one thing, that no good allopathy doctor will prescribe antibiotics for you. They will understand. I still hear from my patients कि मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे पेट में और पीठ में दर्द हो रहा था, उन्होंने कहा कि पेन किलर मत लो, मैं तो आपको वही प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ. इंस्टेड यू रादर डू एक्सरसाइज, उससे आप बेटर हो जाओगे, आपका पीठ में दर्द बेटर हो जाएगा. एंड दिस इज अबाउट डॉक्टर, राइट? पहले वो एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा है, वो भाई पेट खाने के लिए नहीं बोल रहा है. बहुत जरूरी है. हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? आयुषी ग्रोइंग अप, पीरियड पेन होता है, पेन किलर ले लो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी ना कि किसी ने गाइड किया ही नहीं. Even I, for a very long time, did not know till I actually became a doctor. My father started seeing me as, proper patient. And I realized I was abusing myself on an allopathy medicine for period pain. That was the worst thing ever. So today, it's been about 7 years, I haven't taken a painkiller. I haven't taken a painkiller for period pains. I just rely on homeopathy. मुझे पता है मेरे menses next week due हैं. From today or tomorrow, I will start with B31 drops, 10 drops in my water. I'll keep sipping on them. And then I'll take magnesia for 6x. ये भी वैक्सीन की आती है. And I'll keep taking it. Supposedly Magforce, I'll take 4 tablets 3 times a day. And B31, I'll just keep it in my bottle and I'll keep sipping it, most likely. इससे क्या होगा, जो मेरे फाइनल डे पे मेंसेस आता है ना, जो फर्स्ट डे का पेन रहता है वो रिड्यूस्ड होगा. और अगर वो आएगा भी पेन, उस टाइम I'll keep taking B31 and magnesia force. I was traveling recently and I got my menses in a foreign country. And I was like, shit, ab kya? And I was like, you have to fight it out. You can't rely on just taking pills all the time like you used to 7 years back. So you have to psych yourself and be better. I took my B31. I made sure जो मेरा caretaker था उसको ड्यूटी दे दी कि every minute मेरे रूम में magnesia for 6x डालो. अगर मैं नहीं भी ब्यूरिन डालो, मैं pain minute, every minute. And it's much better. Every 2-3 minutes he was on duty every minute because उस time pain intensity ज़्यादा थी ना, तो I increased the dose that time. But then, of course, I got better and I didn't need it. I went to sleep. So, can we say कि जैसे मेडिकल साइंसेज में कहा जाता है या नॉर्मली भी हम जनरल लाइफ में कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो क्या हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी उसी चीज़ पे चलती है कि प्रिवेंशन क्योर से ज़्यादा बेटर है? सो वी टेक मेडिसिन पहले ही अपने डेली लाइफस्टाइल में हम चीज़ें ले रहे हैं, इस तरह की जो आपकी ड्रॉप्स है जैसे आपने 1 हफ्ते पहले लेना शुरू कर दिया. सो दैट इज़ काइंड ऑफ प्रिवेंशन कि मेरा वो दर्द ना बढ़े. कैन बी कि वो थ्योरी इसके अंदर पूरी तरह से चलती है. I use it. And a lot, even our master founders said about prevention a lot. That prevention is better than cure somehow. And I do feel like तभी माँ बाप जब क्लिनिक में आते हैं बच्चों के साथ कुछ ऐसा दे दो कि सीजन चेंज में बीमार ना हो बच्चे. So that's also prevention. BP, sugar, and chronic kidney failure का भी
और दोनों बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिजीजेज हैं, और एलोपैथी में तो इनकी रेगुलर मेडिसिन आपको लेनी ही लेनी है, बट देन ऑल्सो होम्योपैथी में भी इसकी दवाइयाँ ली जा रही हैं। और बहुत लोग उसको किडनी वाले जो लोग हैं जो किडनी के डिजीजेस से गुजर रहे हैं, तो वो लोग होम्योपैथी लेते हैं उसको अपनी ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या हम दोनों को साथ में इस तरह से ले सकते हैं एक बैलेंस बना के? Yeah, so I'll tell you in a few examples of my cases. Few of my patients diagnosed with diabetes instantly didn't want to go on the medicine. Then I gave them diabetes drops. I gave them Vitamin coagulants. So diabetes drops is basically 4-5 herbs का mixture, and वो immediately आपके pancreas पे act करता है, further making your levels in the body better for diabetes. Second, Vitamin coagulants is number one for diabetes. It's amazing. So I use these two things for diabetes mainly, and I was able to reverse that. Not just one case. Till now, whenever there is a sugar spike, or whenever there is a spike in blood sugar levels, as we say, they immediately go back to that. Now coming on to patients who are already taking things like metformin, which is a drug for diabetes, or other diabetic drugs. For them, I taper it down. So they are on their metformin or any other, let's just say anti-diabetic drug. I start my medication, blood sugar levels और नीचे आ जाते हैं. Suppose 100 है, तो वो और नीचे आ जाएंगे. विद metformin 100 है, तो वो और नीचे आ जाएंगे, वो 50 आ जाएंगे. फिर मुझे पता चलेगा मेरी मेडिसिन काम कर रही है. धीरे धीरे I'll taper the dose off. You can't get allopathy once you're on it, because your body is dependent on it. It's like saying metformin is basically a dependency only कहीं ना कहीं. So when your dependency is there, you need to reduce it day by day. I've done that also. And it takes time, it takes resilience from patients also to not get worried, to not get anxious. But then you're able to do it. See, BP, I'll stay a bit away from that. BP, I just do complementary. I personally don't do BP replacing allopathy and homeopathy for one reason. BP अगर high हो जाए, hemorrhage, as I said, हो सकता है, which is the most deadly thing to have. You can die from it. So if you think, this is what I'm saying now, homeopathy का lacuna सिर्फ यही है कि जब emergency हो जाएगी, उसमें homeopathy काम नहीं करे. Homeopathy will work, but it won't work in emergency cases, which has a beautiful care of allopathy today. I will not deny it. So I've seen so many patients of mine, they take their BP medicine, but they also take my medicine. So they take something like BP8. So that हम taking medicine की dose बढ़े ना. You get एक मेंटेन करने के लिए मेंटेन कर लो, या कम हो जाएगी डोज अगर आप होम्योपैथी भी ले लो. They want to just reduce the dose. So probably if they're taking BP medicine every single day, if I start BP, then they take a lower dose of it, or they take it every alternate day. Depends on case to case. You must not medicate just by your own example or just by this podcast for just BP, because it can be deadly also for all of you out there. But this is something that whenever you start something with BP and sugar, be mindful. Like sugar ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर लिमिट में है. अगर हाई ब्लड शुगर लेवल्स है, कैसे मैनेज होगा? This is where I think we need to be a bit more mindful. देखो, बिकॉज मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे होम्योपैथी डॉक्टर बनकर सिर्फ होम्योपैथी की प्रचार नहीं कर सकती. इट्स अनएथिकल. मैं सिर्फ ही नहीं बोल सकती कि देखो होम्योपैथी हो, आपकी सारी दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी. दिस इज रॉन्ग. Every kind of reel today we're seeing on Instagram, I feel like it's so unethical today. People are not realizing that when you say आपकी सारी BP की दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी, आप ये करना शुरू कर दो, it is very wrong, because God forbid a patient can die if the patient is dependent on a BP medicine. That's what I say to all my BP patients. How when it comes to other diseases, homeopathy is a great skill. खांसी जुकाम, fantastic, you know. इसी के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि ये आपकी B22 ड्रॉप्स ली थी, एंड देन फ्रॉम फर्स्ट डोज ओनली मुझे बहुत आराम मिला, एंड देन आई टुक 2. नाउ आई एम सिटिंग हियर, आई वाजंट इवन एबल टू स्पीक. इतना मैं स्नीजिंग इतनी ज़्यादा थी, मुझे इतना कोल्ड था, फीवर था, बट देन जस्ट 2 डोज. एंड आई थिंक कोल्ड के लिए तो बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में. Cold, cough, fever, allergies, skin diseases, eczema, psoriasis, gluten allergy. Even कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी high levels हैं, not extremely high for diabetes, can be done. For your stomach, gut issues, Crohn's disease, piles, fissures, rheumatoid arthritis, general arthritis, osteoarthritis, swelling, injuries. Homeopathy is a great scope in all of that. Headache, everyday life, homeopathy is very good. Hair growth, hair fall. So कुछ myths and concerns भी हैं होम्योपैथी से रिलेटेड.
जैसे कि सबसे पहला तो ये कि बहुत स्लो है कि और लोग ना कहते हैं कि हमें सूट नहीं करता, मे बी बिकॉज वो इतना ज़्यादा टाइम कंटिन्यू नहीं करते हैं और इसलिए वो बीच में छोड़ देते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें तो सूट नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ स्लो। तो क्या ये सच बात है कि काफ़ी टाइम लग जाता है और यार ये रीज़न है कि हम सिर्फ होम्योपैथी ले रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? जब आप कहते हैं ना होम्योपैथी सूट भी करे, एक्चुअली वेरी गुड एग्जाम्पल, बिकॉज व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन यू सेंट मी अ पॉइंटर, आई वाज लाइक एक एग्जाम्पल तो मैं बताऊंगी कल, बिकॉज कल नहीं हुआ है. सो आई वाज इन द क्लिनिक एंड आई डोंट फेल इन माई केसेस ऑफ एक्ने, आई डोंट फेल. एंड when I don't fail, I mean, I genuinely don't like failing in life in whatever I do, especially when it comes to my patients. If my patient is sick, I am sick mentally. So he's that person for me. Like all my patients know I'm available 24/7 for them. So I don't fail in that. I take that as a very big pride for me, right? And I spoke to my patient and she said acne increased after 1 week. I said, this is not good. That means something is up, something is wrong. The medicine is not suiting you, something is up. And then she said, but ma'am, something happened. 1 week after taking the medicine, yes, it was increased. But after 2 weeks, acne definitely was reduced from 30 to 40%. I said, till now, you've eaten the medicine for 1 month. Has the acne reduced or not? She's like, it's definitely reduced. So now, my understanding of this entire scenario is that in the first week when the patient took the medicine, it definitely, as you said, did not suit them, was a concern. But everything takes time in the body. So it takes time for somebody to get acclimatized to a new environment. यहाँ से कनाडा जाओ तो ठंड लगेगी 4-5 दिन, 4 महीने में ठीक हो जाओगे ना. So it takes time. It takes some time for your gut to accept certain medicines. मैंने ये भी देखा है certain times, इसको homeopathy aggravation बोलते हैं, very common है. Certain times when patients take homeopathy, कहीं ना कहीं वो मेडिसिन नहीं सूट करेगी, थोड़ी aggravation हो जाएगी या पेशेंट्स को लगेगा सूट नहीं करेगी और aggravation हमें दिखेगी. This ultimately helps lead to a better condition. So it's not like उसको सूट नहीं करी, but I will say it took time for it to suit her. सेम चीज़ होती है ना, हम कोई नया मेकअप प्रोडक्ट लेते हैं, कभी कभी सूट करता है नहीं करता. या लेट्स टेक अ मोर ऑर्गेनिक एग्जांपल, हम कुछ नया खाते हैं, हमारे घर को सूट करता है नहीं करता, कोई नए रेस्टोरेंट में जाते हैं, टेक्स टाइम. आप अपने बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चों में कॉलिक बहुत कॉमन है. अगर आपके घर में बच्चे हैं आपको पता होगा, एंड उनको आधे दिन में पेपी हो जाएगा, वो रोना शुरू, एंड गैस कॉलिक, फिर मम्मीज उसको दबाती रहती हैं, सौंफ और जीरा देती रहती हैं, सीख करती रहती हैं. क्यों होता है? बिकॉज बच्चे जब छोटे होते हैं, they don't have that kind of strong gut to accept everything. They don't have enzymes for everything, right? So if they don't have enzymes to digest further, how will digestion happen? तो उनको पेट दर्द होएगा, symptoms होंगे, indigestion के symptoms होंगे, नई नई चीजें खा रहे हैं रोज. Exactly. Similarly, it takes time. अब आप gluten allergy में भी देख ला, जब किसी को gluten allergy हो गई, और the recent case I saw, this person is now eating chola bhatura and he's very happy. So he's gone from not even having a grain of gluten in his house to now eating chola bhatura. I have one at life, there is no other victory. So now you'll see uske gut pe wo dheere dheere it's showing up, it's improving. It's a good sign. It's not a bad sign at all. He's able to enjoy life, uski quality of life better ho rahi hai. Similarly, it takes time. It's not like it won't suit you, it takes time. Plus you said something so good, Ayushi, that people think homeopathy is slow. So it might not suit them when they are slow है, मेरे को दर्द ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं कर सकती इतना वेट. That's why even I told you that example कि मैंने मैकफॉस 1-1 मिनट में ली, क्योंकि मुझे इतना दर्द हो रहा था. ऐसे लाइक कार्बन में लेके मैंने 1-1 मिनट में फॉर अबाउट 10 मिनट ली होगी, तो मैंने 1-1 डोज ली होगी 10 मिनट में. नॉट बैड, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा. Similarly, again when we talk about slowness, homeopathy is not slow, your homeopath might be slow. So if you take your remedies from your homeopath, ask your homeopath what remedies they are giving you. Because if you go to any other doctor and you don't know the remedy, or वो और में लिखा है, हम क्या समझेंगे, हम आपको कैसे हेल्प करेंगे? तो this is something that's very important. कई होम्योपैथ्स, मैं ये बोलूँगी, सारे इंडिया में होम्योपैथ्स एक जैसे नहीं होते, जैसे सारे इंडिया में एलोपैथ्स एक जैसे नहीं होते. आपको एक आयुर्वेदा डॉक्टर अच्छा लगेगा या एक थेरेपिस्ट अच्छा लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा. चलो, you don't like two therapists, and would you like the third one? You like the way they speak to you. Similarly, it's about homeopathy as well. You choose the right homeopath, and you choose the homeopath who is invested in your health and won't sleep at night till you sleep. You need somebody who cares for you as a doctor, not somebody who doesn't care for you, and that's very important. This is the biggest thing, I think. Yeah. Today we can't find it easily, that somebody is that concerned for you, even a doctor. Unfortunately, that's true. Unfortunately, They just want the key आप आए and they are just writing the prescription, उनका fee हुआ, and then here अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, अगली बार फिर आ जाना. So that is it. yeah, but one thing
at least for me, I can say, I can't say for everybody, this she's saying she's right. Because I can see it happening. I can see it happening for most homeopaths, as well as other paths, other people also. But you need to find good people. And good people find good people. So if you're a good person, you better find someone. I found you. Yeah, and I found you. So yeah, and then the first thing I said to you also, Aishi, was that when I heard about your entire makeup career from you as well and how you're a makeup artist, it's important for people to have that kind of empathy to help each other in whatever manner they can. No matter how big you are, it's how you treat other people that truly defines you. Nothing else. You asked me कि आपने क्या सीखा podcast से? Yeah. The another thing I learned today. Yeah. But obviously we have it somewhere, अपने अंदर होता है, but then अगर कोई सामने से बोल देता है तो वो और आप उसको अपने अंदर उतार लेते हैं फिर ऐसा हो जाता है. वो तो है. And good people attract new people. So if you're good person, you attract good homeopaths. And then there's a Sure. Researchers ने बोला है कि इतना इफेक्टिव नहीं है होम्योपैथ, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है. सो उसकी वजह से भी बहुत लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं होम्योपैथी. बट देन रिजल्ट्स मैं कहूँगी कि ज़्यादा है सक्सेस की होम्योपैथी में एज कम्पेयर टू एलोपैथी. तो क्या रीज़न है कि वो रिसर्चर्स में नहीं एविडेंस दे पा रहे हैं जबकि रिजल्ट्स बहुत अच्छा है. इवन ऐसे डिजीजेस हैं जो एलोपैथी में क्योर नहीं हुए, बट देन होम्योपैथी में उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. जैसे माइग्रेन है, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई इलाज नहीं है इसका. तो सो इजी है ना. सो मेरी मदर बचपन से हम देख रहे हैं वो इतना सीवियर माइग्रेन उनको था एंड अभी काफ़ी उनको बेटर हो गया. डॉक्टर्स ने कभी उनका दवाइयाँ दे ही नहीं, बोले ये तो ट्रीट ही नहीं सब नहीं है. अभी बहुत चेंज हो गया मे बी बिकॉज वी हैव चेंज्ड हमारा एनवायरनमेंट. पोल्यूशन नहीं है, हम लाइफ स्टाइल हो गया है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो गया. पहले स्ट्रगल वाला लाइफ था, अब थोड़ा कम हो गया. भी हो जाता है, वो पता भी हो जाता है. एंड शी मेनोपॉज है ना. Yeah, but she has crossed it, right? She's crossed it. When she crossed it, that time was the worst time for her. Yeah. Right. That is right. If you're in perimenopause, and if you're in menopause, at this time, if you have a history of migraine, it is so common for people in perimenopause and menopause with a family history of migraine to definitely have migraine attacks. XXX plus limiting. She's not able to eat, not able to sleep. So this is where I gave Migraine and B12. So if you have SOS migraine, बहुत ही severe, B12 in water, keep sipping till you're better. Keep sipping it. Keep sipping on it constantly. And I gave Migraine tablet, 2 tablets per day if you have a severe migraine tendency. And then you slowly get better. So many people have got better. So many. There's not one. I keep taking screenshots. My phone is getting full now. So good. I think people should really believe and try and then believe. And trust their doctor. Trust is very important. Have faith, have patience. You'll heal. Migraine, another thing I have to tell you is that something that really tried is, so migraine is technically in one side of the head. Blood flow also reduces. When yes, it reduces, oxygen reduces. Oxygen reduces, you already are really feeling antsy, it gets really dark. Now what you should do right now when you have a migraine attack is have enough water, hydrate yourself. Immediately start sipping on water. So what I do is B12 पानी में डलवाते हैं, ऐसे पानी पीते जाओ जब तक heading better नहीं है. And keep doing deep breathing. It is the biggest hack for migraine. Keep doing deep breathing. You take a deep breath in, out. Keep doing it for at least a minute. I've seen it genuinely helps. This also helps बहुत सारी और चीज़ों में भी deep breathing. Yeah, so much anxiety attack. Anxiety, validation, and respiratory problems also. Yeah. My dad, after COVID, when he was hospitalized, I remember he said, एक बार 10 तक हिंदी करनी ना, सांस रोक के फिर निकल जाने देंगे. And yeah, he literally was practicing. He said 1, 2, 3. For he should hold his breath in cold because cold was a draining back for him. And I remember when he was admitted, he took his homeopathy to the hospital. We know homeopathy. I'm a 3rd generation homeopath. So I come from a family where I've just been given homeopathy 24/7. So he literally took his medicines and every single day उनकी medicines तो उनके पास थी, उनका खाना भी घर से जाता था. I remember. And because उनको taste तो आता नहीं था कोविड के टाइम पे, तो खाना भी घर से जाता था. And because he wanted a specific diet to heal. And उस टाइम पे you shouldn't take dairy if you have respiratory problems. Cold cough के टाइम पे dairy is the worst thing you can do. So cold cough के टाइम पे अगर आप दही, दूध, लस्सी, छाछ, कड़ी, cold drinks, CLDs, anything cold you take, it's the worst for you. The worst. Garam pani with ginger is the best for you. So सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में
जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, हम उसको तो ब्लेम करते ही नहीं, हमें बस ये पता है कि हम बीमार हैं और हमारी हेल्थ खराब है। मैं भी आ गई इसके अंदर, सब आ गए। तो इसके लिए हमारे को बहुत सारी कंसर्न्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो शायद पहले थी भी नहीं और अब आ गई है। तो उसमें होम्योपैथी की क्या क्या ट्रीटमेंट है, मैं आपसे 1 by 1 थोड़ी सी चीज़ें पूछूंगी। तो मेरे को लगता है कि इंसोम्निया सबसे बड़ी बीमारी है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, बट इंसोम्निया में अगर हम स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी चीज़ है, एंड देन उसकी आपको हैबिट हो जाती। तो इंसोम्निया को कैसे रिकवर करें होम्योपैथी की हेल्प से, एंड कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करें। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स हमारे अंदर है ही नहीं, अब हम सहन ही नहीं कर सकते हैं पैनिक इतनी जल्दी। तो उसके लिए क्या हम होम्योपैथी से हेल्प ले सकते हैं? अगर आपको इंसोम्निया है और आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको दिस कॉम्बिनेशन विल डेफिनेटली हेल्प। लाइक I don't think there's one person who it doesn't help. So what I do is I take 5-flower remedy, which is Dr. Baksh's flower remedy. 5 flowers are in it, okay? Then I take Passiflora mother tincture. I definitely mix both of them. 10 drops of 5-flower remedy, 10 drops of the Passiflora mother tincture. Put them in your रात वाली water bottle, जो आप रात को bedside पे रखते हो. Have that at 7 p.m. Have about half a glass of that bottle at 8 p.m. and at 9 p.m. And what I've seen is when you repeat the dose 7, 8, 9 p.m., let's just say 10 to 20 drops, या आप ऐसे भी कर सकते हो, और 5-flower remedy के 10 drops ले लो 7, 8, 9 p.m. and Passiflora के 10 drops ले लो 7, 8, 9 p.m. Definitely helps. Definitely helps. Now the trick is, Ayushi, हेल्थ तो करता है, रिलायबिलिटी तो नहीं देता ना, मैं सबसे बड़ा ट्रिक है। एंड बेस्ट बात ये है, आई सीन पेशेंट्स वेयर आई वीन देम ऑफ। ठीक है, हफ्ते भर दवाई ले ली अपनी, अब आपकी स्लीप साइकिल ठीक होगी, अब आप अपने आप सोएंगे, अब मैं आपको मेडिसिन नहीं दूंगी। अब आप 5-flower remedy को अगर आपको लेना ही है, आप रिड्यूस कर ले, टेक 2 drops, टेक 5 drops, रिड्यूस इट, एंड देन आई वीन देम ऑफ एंड एब्सोल्युटली फाइन। नींद आ रही है, जो लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, कैन दे ऑल्सो तैयार जाए, या एंड देन उनकी स्लीपिंग पिल्स क्या इससे बड़े हो जाएंगे या कम हो जाएंगे इजीली। और जो लोग बहुत सालों से लाइक फॉर डिप्रेशन ये ले रहे हैं स्लीपिंग पिल्स, लाइक मैंने बहुत लोग देखे हैं जो सो ही नहीं सकते अपनी दवाई के बिना। तो और वो भी ऐसा होता है, एक चीज़ मैंने देखी कि स्लीपिंग पिल ले ली आपने, तभी की तभी आप नहीं सोए तो वो भी काम करना बंद कर देगी, एंड देन यू डोंट स्लीप ओनली दवाई लेने के बाद भी। तो क्या उनकी भी दवाइयाँ छूट जाएंगी? आई फील लाइक when we talk about sleep, your sleep is a very important factor for your health. People don't sleep because people don't get tired. People don't get tired, and then they open their screens, they activate their circadian rhythm in the morning. So basically, जो आपकी morning light होती है, that's a very big cue for your circadian rhythm to wake up. जो रात की lights होती है वो dim होती है, and that's why सुबह सवेरा रात को बिल्कुल dim lights and बिल्कुल सन्नाटा, so you can have that restful sleep. That indicates your circadian rhythm of your sleep, right? प्रॉब्लम तब आती है जब हम रात को स्क्रीन देखते हैं। एक बार जब हम रात को स्क्रीन देखते हैं, आवर सर्केडियन रिदम इज रूइंड, बिकॉज उसको मिलता है लाइट, फ्रेश लाइट, वाइट लाइट, ग्रेट, सुबह मेरा टाइम होने वाला शायद, अब तो नींद नहीं आएगी। योर ब्रेन इज यूज्ड टू वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद लाइट, सो व्हाट आर यू डूइंग? यू शोइंग योरसेल्फ लाइट, एंड दैट इज नॉट एट a TV's length. You're showing it to yourself at the length where you're probably next to it, touching your nose on it, you know, that type of thing, because you don't want anybody else to know that you've woken up at night. So that's the major problem. And when you see your screens, your eyes get tired after 1.5 hours. After just watching reels for 1.5 hours, then you think you're falling asleep because you get tired then. Then you're actually exhausting yourself and your eyes dead. और बहुत लोग पूछते हैं eye strain, eye number. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. You are not to sleep late. You have to sleep early. But to sleep early, you need to get tired. To get tired, you need to exercise daily. You need to activate your body every single day. Morning exercise is the best exercise. I personally feel that exercise is the best medicine today if people can have. अगर लोगों ने exercise ठीक से करनी शुरू कर दिया और खाना ठीक से खाना शुरू कर दिया, 90% क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे। 90% क्लिनिक्स कंट्री में क्या बंद हो जाएंगे इजीली। आप खाना ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, एक्सरसाइज ठीक करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। लिटरली पहले के दिनों में तो ऐसे ही होता था, डाइट अच्छी होती थी एंड देन फिजिकल वो बहुत एग्जैक्टली बीमारी नहीं पड़ता था। आजकल तो वी ईटिंग मैक्सिकन टुडे, जापानीज टुमारो, इंडियन डे आफ्टर, विदाउट एनी एफर्ट ना। Earlier, meat used to be a luxury. Right? So meat wasn't an everyday commodity or an item that you could have. बटर चिकन रोज नहीं खा सकते थे, नहीं मिलता था डिलीवरी एप्स पे, नहीं होते थे ये सब चीज़ें। मीट वॉज अ लग्जरी, यू कुड ओनली हैव इट वंस अ वीक।
in 1900s and 1950s, 60s, it was not easy to get. It was expensive. So not everybody could afford it. Problem is, today we have everything. We have everything. We have Mexican, Chinese, Japanese, Italian, pasta, pizza, everything. So we want to have everything, but we don't want to work for it. Right. And everything is not made for our body. Yeah. कि हम बाहर की देशों की चीजें खा रहे हैं, पर क्या हम उसको पचाने की क्षमता रखते हैं? और प्रॉब्लम ये भी नहीं है अंशी कि हम बाहर के देशों की चीजें खा रहे हैं. प्रॉब्लम ये है हम बाहर के देशों की प्रोसेस चीजें जो हमारे पास आ रही है वो खा रहे हैं. If you actually eat a pizza in Italy, you realize it's 10 times different than the pizza you have every single day in the pizza place you order and get it from. 10 times. I know my mom when she was traveling to Italy, I was probably a teenager, and she said, Tanya, पता है हम ना इतने पिज्जा खाते थे, मैंने कहा हम खाते कैसे थे? She said, Tanya, वो लाइफस्टाइल क्या है कि आप चलो, आप वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी ये तरह चलते हैं. They work. When you walk, you get tired, you digest things better. Today, walking has become an exercise for us. Walking for Italians is a lifestyle. For British people, it's a lifestyle. You walk towards things. You don't take a cab, you don't take a metro, you knock it out. When you work, you automatically are exercising and are becoming active. Your metabolic rate is better, your heart rate is better. Your circadian rhythm becomes better. So many factors. When you walk, everything becomes better. You get happy hormones. It's brilliant. But the problem is we're eating processed food from outside. So the pizzas, pastas you get here are not necessarily the best quality. Or the Japanese food or the ramen you're eating outside, have you seen the kind of stuff that's in it? It's really questionable for all of us. That kitni cheezon mein dala hua hai, hame pata hi nahi hai. Hame literally nahi pata. And coming back to the point of mental health, Yeah. that also like panic attacks and anxiety. What to do for that? Homeopathy ke through. So, when you talk about mental health, I feel still people need to sensitize themselves about anxiety and palpitation and mental breakdown or mental health havoc or any kind of mental health problem today, because even today when I give anxiety medicine now, young बच्चे आते हैं, I feel is most effective. Because ये देखो हमारे पास pressure कितना है. We are watching reels, we're comparing ourselves to strangers on the internet, and we think everybody has the best life and we don't. So we think we have to work hard. So we have to work harder than a normal person who exits work at 5. Some people probably work after 5 to all the way at night, don't sleep, exert themselves, don't eat because they want to save up money. Don't eat proper, skimp on eating proper food. And all these things definitely lead up to big mental health breakdown. And then emotionally also, they get disconnected from the families. And जो मैं कहती हूँ कि घर जाकर एक सुकून मिलता है अपने परिवार से मिलके, वो तो खत्म ही हो गया. So you don't have emotional support भी खत्म हो गया कहीं ना कहीं. And क्योंकि आयुषी सबके पास टाइम नहीं है. Right. And earlier time पे ना dinner time used to be a very important thing. Now नहीं. किसी ने Zomato से मंगवा लिया, किसी ने रात को 10 बजे खा लिया, किसी ने 8 बजे खा लिया, किसी ने खाना ही नहीं खाना, वो अपने phone पे है. Today dinner time and breakfast conversations have become the phone instead of the person. That is the biggest problem. We're not communicating. We are basically in our own world comparing ourselves. Whenever you eat your food, also it really matters how you eat your food. So if you're really seeing something dark and you're really seeing something that's troubling you, you're comparing yourself, 90% of the time, you're comparing yourself to people on the internet. You see a story, you're not seeing a story technically because you want to see it. You're seeing a story and then you're comparing yourself कि उसके पास ये achievement है, मेरे पास क्या है? उसका supposedly इतना बड़ा आज show हो रहा है, मेरे पास क्या है? Not realizing that everybody is struggling in their own way. Comparison is the biggest thief of joy. The more you compare yourself to other people, the more it's going to lead you to a negative mental health space. So when it comes to anxiety and mental health problems, again for anxiety, the best remedy that I've taken myself also, because I used to have travel anxiety all my life, being a car, taxi, journey, everywhere. So I started taking 5-star remedy in a water bottle and I kept sipping on it. And it really felt relaxing. So sometimes people have anxiety because of the situations around them. Not everybody is able to take the stressful situation around them. कई लोग होते हैं कि अपना एक कहते हैं ना न्यू कॉग्निटिव बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है यार प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर लूँगा. कई लोग नहीं कर पाते and that's okay. We're not all built to take armors out and take swords out and fight. Well, it's okay to break down. So many times, even recently, on my story, I purposely put these days when I'm feeling low, when I'm not feeling good, I've put it up. क्यों दिखाऊं लोगों को कि सब कुछ सही है? गलत है, बहुत गलत है. I woke up one morning and I remember I spoke to my mom and I said, I just feel anxiety. And immediately I took my 5-star remedy in water
I was much better, much better. Even people generally who suffer from anxiety do not take anxiety pills. Instead, think about this option first. Then you can think what's good for you for long term or short term. But take this 5-flower MD, it's really good. And it's known worldwide. This formulation is known worldwide, and it's also proven to be effective. And it's much more safer because it's just flowers. So I feel like if it can work for me and all my patients, it can work for anybody. It's a good homeopathy alternative to have also for all of us. Why not? True, and without साइड इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स के बिना आप एक अच्छी चीज़ ले सकते हैं. Yeah, nothing. कि आई साइड के लिए भी मैं आपसे पूछने वाली थी कि स्क्रीन यूज़ आपने बोला कि हम रात में देखते हैं, रील्स देखते हैं एंड ऑल दैट, बट उसके अलावा हमारी मजबूरी भी है क्योंकि आजकल डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ. हम वर्क फ्रॉम होम है, हम स्क्रीन पे बैठ के सारा दिन काम कर रहे हैं एंड देन लाइक वी ऑल्सो आर वर्किंग ऑन स्क्रीन्स. अभी रिसेंटली तो मेरा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बन गया. तो उसके लिए क्या हम कोई मेडिसिन ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड डाइट? There is no medicine for eyesight. Nothing. There is no medicine. If you think that just taking by one medicine will help you with eyesight, no. It's a whole lifestyle. So I tell you what you should be doing regardless. If I just give you one medicine, suppose I give you a free shot, it won't work. It won't work. Look at it now. Why would a medicine work? For a reason that's lifestyle related. You get it? अगर इंटरनल प्रॉब्लम गट की होती, गैस की होती, मैं गैस्ट्रोइड और नक्स ओमेगा दे देती, ठीक हो जाता. यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरे दिन लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, मैं क्या करूँ? दिस इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. दिस इज नॉट नेसेसरली अ मेडिकल प्रॉब्लम. शुड आई नीड अ मेडिसिन फॉर इट? बहुत DMs आते हैं, आंशी आई स्ट्रेन बताओ, आई प्रॉब्लम, मेरे बच्चे को आई प्रॉब्लम है. और क्या वही पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को खाना खिलाते टाइम टीवी दिखाते हैं, और टीवी सॉरी टैबलेट और फोन देते हैं. टीवी का फ्रिक्वेंसी इज एट अ डिस्टेंस नाउ, सो यू कैन नॉट टच इट, यू कांट मूव नियर इट. But with screen so near and gaming so near, you know, it's just really tough. What you should rather do is for your eyesight or your child's eyesight. First of all, screens are a big no-no. Screens are a big no-no. I remember growing up. You remember growing up? हम screens तभी देखते थे जब हमारी मम्मा सीरियल देखती थी, याद है? वही हमारा टाइम होता था बिकॉज हम उनके साथ बैठते थे, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे जब वो कोई सीरियल देखती थी. यानी कभी सासी कभी बहुत ही ऐसा भी याद है सब, you know? So we used to watch that for what? Half an hour? 45 minutes? उससे ऊपर तो सीरियल था, नहीं से बैठ के देख. यहाँ में टीवी होता था, हम सब बैठ के या नीचे बैठ के देखते थे. Nothing now, right? अब क्या हो रहा है? That half an hour a day has now what? 7 hours a day? Because we're all working online. Everything is online. Few changes that people who are working online can do is start taking your notes on a pen and paper. Really helps. Really think of having protective glasses. Even today, if you use phones, there are films that have dim lighting at night to help you. You know, they have that option to reduce brightness and do it for your kids. It really matters. ऐसा भी कहा जाता है कुछ एक्सरसाइजेस हैं ना जो आप आंखों के लिए कर सकते हैं एंड कुछ दूर से देखना, सुबह उठ के दूर की नज़र Also, sunrise देखना. सनराइज. Wow. Sunrise देखना is very, very, very noted as to be very, very good for the eyesight. If you watch the sunrise every morning, apparently it strengthens your eyes. Apparently. I haven't seen a research, but it does. I've seen people who do that and they don't have specs. So if something is working, you know, if not anything is, something is working. नेचुरल चीज़ों को अडाप्ट करके और लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस करके मे बी छोटे-छोटे and taking breaks. You have an online life, take a break. You don't have to be on mobile screen all the time, no? You can take a break. Meetings ही होती है ना online mostly. या Excel पे काम होता है या Photoshop पे काम होता है. You can take a break. No? So you can take a break for 5-7 minutes. It's okay. You can take a break. You can do some eye exercises. You can do up, down, left, right. Simple stuff. Like in every break, हम हर ब्रेक में एक्सरसाइज कर सकते हैं. हम तो धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. अब क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इम्यूनिटी. आज हम नहीं लड़ पा रहे लोगों से, क्षमता नहीं है अंदर. तो ऑफकोर्स हमें लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हैं. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? बिकॉज मुझे लगता है कि हम डाइट भी अच्छी ले रहे हैं बट देन ऑल्सो हमारी सब चीज़ें जो हैं वो पैकेज है. हम अच्छा दूध नहीं ले रहे हैं, हम अच्छा पेस्टिसाइड्स वाली दवाइयाँ वाली सब्जियाँ खा रहे हैं, पैकेज फूड है, आटा भी चक्की से नहीं आता है आधे लोगों का. तो ये चेंजेस हम तो नहीं कर सकते इतने ज़्यादा. तो अपनी इम्यूनिटी को कैसे बिल्ड करें, स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी. You know, everybody will be surprised hearing this because most questions are about immunity development. हमारी बच्चों की immunity better कर दो, ये कर दो, कर दो. आपकी बॉडी में एक नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं. अगर आप मुझे ये कह रहे हो आपको इम्यूनिटी बेटर करनी है, इसका मतलब ये आप अपनी बॉडी बेटर करो पहले. तो देयर इज नो पिल फॉर इम्यूनिटी.
Homeopathy medicine helps rearrange your vital force in the body. Vital force एक ऐसी चीज होती है बॉडी में जो बॉडी को हेल्दी रखती है. जब वो डिरेंज हो जाती है, हमारे होम्योपैथी में बताते हैं, तब ह्यूमन सिक हो जाते हैं और उसका ठीक करने का, उसको रीलाइन करने का काम सिर्फ होम्योपैथी करती है, राइट? बाकी तो हीलिंग बॉडी करती है. सो ट्रस्ट योर बॉडी इज द बिगेस्ट इम्यून सिस्टम. द प्रॉब्लम इज immune system triggers are not sleeping enough, not eating the right thing, stressing too much, investing in a lot of negative people around you. That shows a very big effect. Not exercising every day, having a very sedentary lifestyle. These things don't matter. These things impact your immune system. And even जो हम एंटीबायोटिक्स जल्दी खा लेते हैं, So bad. वो भी एक रीज़न है So bad. कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही है. So bad. Abuse of any medicine is bad. It's definitely bad. Another thing is बच्चों की immunity, you will be surprised to know, I feel is most active. और जब हम बच्चे होते हैं हम जल्दी बीमार पड़ते हैं, हर सीजन चेंज, हर 2 महीने में, बिकॉज हमारी बॉडी इम्यूनिटी बना रही होती है अपने आप. हाउ? When we get sick with a viral infection, our body creates antibodies towards it, right? When we have antibodies in our body, and again that virus comes, we don't get sick then because मेरे पास तो एंटीबॉडीज है उस वायरस के पास लड़ने से. तभी तो चिकन पॉक्स 2 बार नहीं होता ना, एक ही बार ही होता है. एंटीबॉडीज है, कोई भी एक ही बार हुआ, लोगों को अलग स्ट्रेन आ गया, वो अलग बात है. But because if I have the antibodies to deal with something, that means my body is the biggest healer. It is the biggest immune system. प्रॉब्लम ये होती है, हम इम्यूनिटी जब डेवलप हो रही होती है ना बच्चे की, हम डर जाते हैं कि ये बार बार बीमार कर रहा है, इसको प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रहा है. इस टाइम आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हो. B22 is for all. You yourself said you got some great results. B33 is for cough. It is very good if your child has cold and cough. Mix both of them in 10 drops, 2 to 3 times a day. 2 times a day is more than enough usually for kids. And it really works. If you want to take Sahara to get better, take homeopathy. There's no harm. I also give Cough Aid Plus. It's very effective for cough. It's almost like an allopathy cough syrup in terms of its results, but it's made completely homeopathically and has great results. You know, so these are a few things I feel that are there. एंड बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी इसी के साथ साथ बच्चों में सबसे ज़्यादा, बड़ों के साथ भी, क्योंकि एक ही है हमारा, मतलब सॉर्ट है कि जो हम पराली जलाते हैं उस टाइम तो पॉइजनस हो जाती है हमारी जो पूरी एयर है. तो उससे बच्चों को लड़ने के लिए आजकल नेबुलाइज कर देते हैं हर थोड़े दिन, हर डॉक्टर नेबुलाइज कर देते हैं उसमें ड्यूरालाइन डाल के. तो क्या वो करना सही है? आप जब अपने बच्चे को इनहेलर देते हो, आप कहीं ना कहीं बच्चे को स्टीरॉइड्स भी देते हो. इफ यू डोंट चूज द राइट ड्रग, आई पीपल यू नॉट अवेयर. उस टाइम किसी माँ को ये ख्याल नहीं आता वो क्या दे रही है, उसको लगता है डॉक्टर ने बोला मैं देती हूँ, और उस टाइम किसी को भी ख्याल नहीं आएगा. Nobody knows. So if your child is having cold and cough, immediately change season अभी है मानसून सीजन, B22 B33 घर में रखो. बच्चों को खांसी जुकाम हो रहा है उनको दो. ये नॉर्मल थी नहीं आएगी कि आपको इनहेलर्स लेने पड़े. ये नॉर्मल थी नहीं आएगी कि ब्रोंकाइटिस हो गया, एस्थमा हो गया. इंस्टेड कॉफ एड प्लस घर पे रखो. कॉफ हुआ इमीडिएटली दो. Today, half of my patients, I told them what to take. I don't monitor them. They tell me मैंने ये दे दिया. I said excellent. I said fantastic. ऐसे जिस मुझे बताते रहना, कोई प्रॉब्लम है मैं यही हूँ. That's what you call creating a revolution at home, where mothers are today capable of giving their children homeopathy remedies and recovering themselves. Just me, they recover themselves. बट वो अवेयरनेस लाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे बोला कि मिथ्स और कंसर्न्स इतनी ज़्यादा हैं कि लोग मतलब करना चाहते हैं, बट देन वो सोचते हैं कि नहीं उससे कुछ नुकसान ना हो जाए, इससे अच्छा डॉक्टर को दिखा लेती हूँ और चलो दवाई दे देती. नहीं यार, it doesn't work like that. It's you shouldn't. If you're a mom, ये 5-6 चीजें याद रखना. Number 1, B22. B22 massively helps with cold. B33 helps with cough. Cough Aid Plus, ये तीनों अपने घर में रखो उन cough के लिए. Fever Aid, fever के रखो, ये चौथी चीज थी. 5वीं चीज, अगर आपके घर में बच्चों को लग रही है तो आर्मी का 30 वैक्सीन की आती है, आप will रखें. एंड साथ ही में अगर बच्चों को लास्ट चीज गैस का इशू रहता है बहुत ज्यादा, आप उनको गैस्ट्रोइड दे सकते हो. इट डेफिनेटली वर्क्स. These 6 रेमेडीज अपने घर पे रखो. इंजरी, गैस और कफ के लिए, फीवर के लिए. डेफिनेटली यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट वंस यू स्टार्ट यूजिंग देम. प्रॉब्लम ये होती है यूज कैसे करें. आप हमें डीएम करो आपकी सिवियरिटी, आपके बच्चे की सिवियरिटी के कंडीशन पर. आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू हैव, राइट? एंड आई ऑलवेज टेक्स्ट माय पेशेंट्स एंड यू सो यू टेल मी, सो दैट. गट प्रॉब्लम जो होती है उससे रिलेटेड ये गैस, एसिडिटी. तो एसिडिटी अभी बच्चों के अंदर बड़ों को भी बुआ कर रहे हैं.
कि भाई लाइफस्टाइल हो गया, बाहर स्विगी जोमेटो 2 मिनट के अंदर हम खा लेते हैं वो सब। तो क्या जो गैस्ट्रोइड है जैसे आपकी, अगर उसे हम डेली लेते हैं फॉर एडल्ट्स ऑल्सो, तो क्या वो हेल्प करेगा? Gastroid is mainly for acidity, gas, belching, bloating, and swelling. जैसे लोग swelling बोलते हैं, but I can't. It's medically bloating. Yeah. So swelling is bloating in the gut, in the stomach, because it's just indigestion in general, nothing more. Gastroid works. So take gastroid 2 a day, it works. Definitely, anybody can take it. Anybody can take it. Above the age of 3, I usually give it because उससे पहले I usually give customized medicines to kids. क्योंकि मुझे नहीं पता कॉलिक हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पता लगता ना. So you have to feel in touch बेबी स्टमक के कॉलिक है नहीं है, उसके लिए फिर क्लिनिक आया। हाँ क्लिनिक आओ, ये जस्ट ये मस कॉलिक हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार उनसे कॉलिक हुआ अपन घर पे मेडिसिन भेज देते हैं. ग्रेट। हाँ ये तो कम 5 मिनट बात करो, नेक्स्ट डे भेज देते हैं मेडिसिन. बट देन ऑल्सो फैटी लिवर, SGOT, SGPT आजकल बहुत हो गया है कि वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, एंड देन डॉक्टर से कि वो कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो होगा ही। तो और इसके लिए मतलब क्या, इसके तो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में। SGOT या सिर्फ लीवर एंजाइम्स होते हैं जो जब ज़्यादा बढ़ जाए लिवर डैमेज इंडिकेट करते हैं. ये तभी भी बढ़ते हैं जब आप कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले लेते हैं ओवर द काउंटर, चाहे वो एलोपैथी हो या वो हर्बल भी हो सकती है. आप लिवर डैमेज भी कर सकते हैं ओवर इंडल्जेंस ऑफ सप्लीमेंट से, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, ओवर इंडल्जेंस ऑफ जस्ट हर्बल मेडिसिन से भी, जो आपको नहीं पता उसमें क्या है, रिएक्शंस भी हो सकते हैं. The right thing for you to do for your liver, if you have liver levels that are deviated and high and damaged, indicating a liver problem, first things you should do is detox your body. The liver is the biggest agent to detox. To support it, do not have processed food, have healthy food. That's very important. Hydrate yourself. No alcohol, no cigarette, no vapes. This also impacts your heart health, your liver, your respiratory health. Moving ahead, I think also taking Nivate. There's a syrup called Baxter's Nivate. 1 tablespoon a day. I've seen some great results. Not just me, doctors pan India use this syrup, homeopathy mein. It is so good. It's called the Live Aid syrup. Fatty liver में it works. Any liver deviations it works, and it's not lifestyle dependent. कभी हमेशा के लिए नहीं लेनी पड़े. वो रोज ले सफिशिएंट है और लिवर है 15 डेज, और ये कोई अदर प्रॉब्लम नहीं है लिवर से रिलेटेड, क्या वो अपने लिवर को हेल्दी करने के लिए ले सकते हैं? Once a week, not more. Once a week के लिए या once in 10 days ले लो, not more. लिवर हेल्दी करने के लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, बाहर की मेडिसिन एलोपैथी ना खाओ, नीडल्स यूरिन नीडल्स नहीं यूज करनी, वेट नहीं करना किसी का झूठा. अगर वो हेपेटाइटिस बी वायरस इज अ वेरी बिग वायरस, जो आपकी हेपेटाइटिस सी एंड बी, ऑल ऑफ दीज इट अफेक्ट्स द लिवर. Needles, safe sex is very, very important because hepatitis can also spread through that. So just all these things are very important for the liver. Alcohol is the worst. It's the worst. Overprocessed diet. Meat is too much. Too much quantity of meat will also hamper your liver. Because by the end of the levels, liver के तो levels होते हैं ना, when you get an LFT done, you get on the sheet in front of you. Other levels पे तो damage हो सकता है. Definitely. इसके अलावा अब आजकल बहुत यंग जनरेशन को, 40 से कम वालों को ही कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं. इसका क्या रीजन है? जितनी ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं उतनी ही ज्यादा आप देखोगे लोगों में हाइपरटेंशन, टेंशन भी बढ़ रहा है. पहले हाइपरटेंशन बीपी आता था 40 से 50 के ऊपर, 50 के ऊपर आता था, 40 पे नहीं. अब आता है 20-30 में. बीपी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, बिकॉज सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज वो कर नहीं रहे हैं. इतनी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है कि पूरा दिन प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, ऑर्डर करेंगे, बिकॉज इट्स चीपर समटाइम्स फॉर पीपल, राइट? Not to realize there's no nutritional value. It's so simple, like you overcook capsicum को overcook कर देते हो ना, उसकी विटामिन सी चली जाती. So overcook करना बंद करो चीज़ों को, sedentary lifestyle बंद करो. People have hypertension today because people are not doing exercise. Really, actually people are not exercising. बट बहुत लोग इसमें जो जैसे हमारे सेलिब्रिटीज हो गए, वो जिम भी जा रहे हैं एंड वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट देन ऑल्सो उनको हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा. When you talk about certain 1% cases like that, you also need to look at their lifestyle. These are people, celebrities and all, who work night hours. You don't know how much sleep they're getting. If you don't get good sleep, it impacts your heart health. It impacts your overall body. Your sleep, your exercise routine, your warm-up in the gym and your cool-down in the gym. What you eat, how much you eat, your processed food, your team, your frying, your way of cooking. All these impact your heart health. Your hypertension, your genetic history. How much stress you're taking impacts your heart health. The more stress you take, the more cholesterol there will be in your body. It impacts stress, impacts cholesterol levels. These are huge factors today. Also, substance abuse, the biggest problem. The biggest problem of Gen Z today, or as we say millennials, is substance abuse. It's so common. You see kids outside vaping.
वेप में क्या होता है, निकोटीन ही तो होता है. How are people running it better than anything else? I don't comprehend that. Recently, I think there were rules passed in other countries where vapes are now being banned because it's so bad for your health. And easily something will be done. It's horrible. It's horrible. If you think that aching is vaping, it's the worst thing you can do for your body. That's what I'm saying. No, कभी भी heart attack का reason एक नहीं होगा, सिर्फ exercise नहीं होती है. It's a multitude of things. See, these things are included उनकी lifestyle के अंदर. Oh, we don't know that. No. But then हमें सिर्फ ये पता है कि उनके साथ ऐसा हो गया, बट हमें नहीं पता कि पीछे क्या वो कर रहे हैं. And processed food is not just pizza burger from outside. It's also whole food that is not cooked fresh. It's not cooked in the right oil. आप वो ऑयल्स यूज़ कर रहे हो, पाम ऑयल्स यूज़ कर रहे हो जो आपको पता ही नहीं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है. आपको ऑयल्स यूज़ करने हैं, आप सरसों मस्टर्ड का ऑयल यूज़ करो कुक करने के लिए, ऑलिव ऑयल करो. अभी नया ट्रेंड आ गया है, पीपल कैन अफोर्ड इट, avocado ऑयल यूज़ करो. There is coconut oil. I usually cook in coconut oil if I have to. I really like it. Or ghee. Ghee is so good for a heart. Actually, ghee has shown some great results in good cholesterol. It's a good fat. Yeah, it's a good cholesterol. It's a good fat. And apparently, it cuts down, of course, if it's a good fat, it's a good cholesterol. It cuts down bad cholesterol. So all these things are important. हम खा क्या रहे हैं? हमारी सब्जियां सुबह बनती है, रात को खाते हैं. फ्रेश खाना तो कोई खा ही नहीं रहा है. Problem इसमें is there. And होम्योपैथी में अब हर्ब्स के थ्रू ही मतलब नेचुरली हर चीज़ करी जा रही है Literally. तो साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है. Nothing. Over consumption of homeopathy remedies, over consumption can lead to handling of homeopathy medicines, which can be interpreted for some people as side effects. But अगर आप एक ही मेडिसिन एक महीना अपने तरीके से यूज चलाओगे, किसी से पूछोगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, you will keep repeating the medicine again and again, will lead to the medicine being cruel on your body. वैसे इनकी क्रूविंग शुरू हो जाएगी, वो मेडिसिन अपने सिम्टम्स थ्रू करने शुरू कर देगी. Hence कोई भी चीज़ ओवर इंडल्जेंस तो करनी नहीं चाहिए, ना रोटी ना राइस, ना कोई भी चीज़ ओवर इंडल्जेंस नहीं करनी चाहिए. तो कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है होम्योपैथी में भी. Yes and no. Yes, if you have the amenity, always DM us, we're here for you. If you don't have the amenity to afford consultation, not everybody does, like I told you a few remedies, take them, give a gap. Take them, give a gap immediately. So take that. Every remedy is not supposed to be taken for more than 10 to 15 days. You're supposed to give a gap. You can't give all these remedies all the time, you know. So you must give a gap of after 10-15 दिन ले लेंगे, चलो एक दो हफ्ते का गैप लेंगे, फिर देखेंगे. And at Daxon we're doing free consultations. Our doctors consult people for free कि अब क्या लो, ऐसे क्या लो, वैसे क्या लो, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, you know, पूछने में और ये फाइनेंशियल दिक्कत ही ना हो. Because we're so hell-bent on helping people that we were just like, नहीं, we want to help you. मैं एक मिनट और इससे बहुत कंसर्न कि होम्योपैथी जो दवाइयाँ हैं वो प्लांट बेस्ड होती है, एनिमल सोर्सेज से ली जाती हैं, मिनरल्स एंड अल्कोहल का भी उसमें यूज़ हो गया. तो कितना अल्कोहल होता है और एनिमल सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? क्या वो कंसर्न करने लायक है कि देख इसमें तो एनिमल सोर्सेज ही है? क्योंकि आजकल बहुत लोग कंसर्न है अबाउट ऑल दिस. See, all homeopathy remedies, dilutions and stuff, mostly dilutions, also have ENA in it, which is a type of medicinal alcohol. Homeopathy में alcohol या medicinal alcohol क्यों choose किया? Because it's the most natural preservative. Now, you have to understand the dose that we give is 10 drops, right? It's 10 drops in half cup of water, which is considered safe as per normal usage. And we're not giving it, I tell you, overconsumption is bad. We're not giving it for overconsumption. One other thing that we need to know is that because all of these things have been made and approved by the pharmacopoeia, and ये method या ENA हम अपनी मर्जी से नहीं use कर रहे. It has been studied in labs. There is accreditation on what type of medicinal alcohol you should use for homeopathy. So this makes it safer. The entire process makes it safer. But again, if you don't want to take it, there's always B drops के B tablets भी हैं. We'll see it on the website. B tablets है which you can use for the. So tablets में अल्कोहल नहीं होता, लैक्टोज होता है. Okay. Same होगा लैक्टोज में होगा. So यहाँ पे कंसल्टेशन काम आती है. यहाँ पे वेट बिकॉज सबकी बॉडी अलग है. मे बी कई लोग लैक्टोज टॉलरेंट नहीं काम करती है वो साइड. नहीं वो मेडिसिनल लैक्टोज है. नहीं नहीं ऑल टैबलेट्स यूजुअली आर कोटेड इन इट एंड इससे कुछ नहीं रिएक्शन होता. मैंने अपने डेयरी इंटॉलरेंट पेशेंट्स को दिया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं होता. बिकॉज फार्मास्यूटिकली ग्रेडेड ना, इट्स नॉट द लैक्टोज यू गेट इन योर मिल्क. Right, yeah, so that's it. Goes into confusion. It's completely different. And I think if you need acute, go for drops. If you need chronic, go for tablets. There's also medicated dopamine, sweet pills. उसकी भी है.
जैसे साइनसाइटिस की मेडिकेटेड नहीं है, कॉफ की है, सब बायोवैक्सीन पे मिल जाएगा. All of it is there. So one can take according to what they deem appropriate, but I think take drops बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी. It's very soft. डेफिनेटली. बहुत आजकल कन्फ्यूजन हो गई है. सब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ, इससे ये नुकसान हो जाएगा. चाय कॉफ़ी जो हम बचपन से खाते पीते आ रहे हैं, तो अगर हम रोटी चावल नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे? और घर का खाना, कहीं कहते हैं कि घर का खाना ही अच्छा होता है, फिर कहते हैं रोटी चावल मत खाओ. सो इस पे ये कन्फ्यूजन आप दूर कर. Overindulgence of any grain is bad. So if you're eating the same grain again and again for lunch, dinner, every single thing, it's bad. So think about it. Gluten is not a problem in small doses. It's a problem in big dosage. So an Indian diet is mainly roti, right? That's the problem. And problem is gluten is a tougher grain to digest in our body. It's not, so gluten, atta is a tougher grain to digest in our body because it contains gluten. And gluten itself is a protein that's tough to digest. It's not bad. It's kind of like a protein only. It's good. It's filling. It does have certain nutritional properties, but I don't do it. I don't do gluten for certain reasons that I have not seen any great impact of atta, gluten in my diet, in my lifestyle. It makes me feel heavy and bloated. So I switched from atta to rice and millets. It's worked miraculously for me because my body does very well on them. I've also seen my mom switch from atta roti to now millet roti, and they have more nutrition in millets. Millets do not give you sugar spike. They are just to be used this much. जितना एक मुट्ठी भर होता है, आप उसको सोक करो और फिर उसको नेक्स्ट दिन चावल की तरह कुक कर लो, सब्जियां डाल लो, make it like a millet pulao. Works excellently. There is a variety of millets, ज्वार, बाजरा, रागी, millions of others, right? बहुत variety है. जितनी variety खाओगे उतना nutrition better होएगा. It's like saying I'm eating the same thing again and again. What kind of different nutrition will I get, right? जब different nutrition आएगा ही नहीं बॉडी में, बेटर है कि different millets खाओ. दो बार तो खाओ ना हफ्ते में. You can feel a difference. सो मेन कंसर्न ये है कि हम रोज एक ही चीज खाए जा रहे हैं, व्हाइट चावल और रोटी. हाँ, वो प्रॉब्लम है. हाँ, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आप इंस्टेड अगर कर सकते हो मिलेट्स इंट्रोड्यूस करो घर में. 2 बारी तो हफ्ते में खाओ ही खाओ मिलेट्स. बहुत लोग तो कहते हैं कि बाजरा पचता भी नहीं है, बाजरा या में आजम नहीं है. बाजरा कुक करना है something is an art. You need to soak your millets. If you don't soak your millets, they are not as easy to digest. They're only days. They're not like atta. Atta was given to us during Green Revolution. Even during this time in Maharashtra, millets is the most commonly used grain there. It's not atta. So Maharashtrians eat millet. They make dosa out of millet. In South India, rice is commonly seen. So they make dosas. Everything is fermented. Everything is healthier. When everything is fermented, you have higher levels in B12. When you have high levels of B12, you're healthier. When you have fermented food, it's great for your gut. What are some great gut foods? Some great gut foods could look like chas. They could look like idli dosa because it's fermented. It could look like achar. It could look like dahi. Great gut food if you have any gut problem. But कांची जो हम बनाते हैं, रेनी सीजन में फिर आ जाएगी. उसके winters में तीन का धाम आती हो मेरा गाँव. These are very good. My only thing is if you want to try millets, soak them and then try them. Bajra is not for this season. Jowar you can try for this season. Bajra is for winter. So you can try jowar. Have it once a week. ज्वार की रोटी कर लो, चावल की जैसे बना लो ज्वार को. It works. I just feel it's a better nutritional profile. Genuinely works. राइट. तो बहुत सारी चीज़ें मिलके हम एक हेल्दी बॉडी बना सकते हैं, या सिर्फ किसी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते. No, like coffee, as you said, is the biggest stimulant today we have. But people with anxiety shouldn't have coffee because it's the one thing I hear this. कि फ्रेंड ऑफ माइन, उनको कॉफ़ी, उनको एंजाइटी इशूज़ हैं, एंड देन उन्होंने कॉफ़ी लिया, एंड कॉफ़ी लेते ही द एंजाइटी ट्रिगर्ड, वो बहुत ज़्यादा हो गई, एंड देन हॉस्पिटल जाना पड़ा. Yeah. It's really bad. And the coffee you get outside are fully made out of black coffee, like espresso. It's really like that. एंड फिर फिटनेस में जिम में दी जा रही. I certainly come from the school where I feel like हमें आदत है एक ही चीज़ को बार बार करने की. हम कॉफ़ी लेंगे तो हम दिल से कॉफ़ी लेते रहेंगे. हम चाय लेंगे तो हम चाय लेते रहेंगे. हमें कोई कॉफ़ी लेनी है तो कॉफ़ी लेनी नहीं. It's just something that we should avoid doing as humans because it's not the best thing for you. Now instead of having chai, you can obviously have your black tea, which is more nutritional. Matcha is trending today, right? It's everywhere. Matcha is everywhere. What do people start doing? People start mixing matcha in coconut milk, oat milk, normal dairy milk. What are you doing? You're decreasing the nutritional value of matcha.
the same way you decrease the nutritional value of coffee. एंड चाय दूध में डाल के उसे पकाते रहते हैं. इज द वर्ड. It's the worst thing. आप उसकी nutrition properly सारी खत्म कर रहे हो. Sorry. So if you're thinking of matcha, coffee, chicory, chai, anything in particular, take it raw form a little bit if you want to. लोग लेते हैं जिम जाने से पहले घी कॉफी लेते हैं, कोकोनट ऑयल कॉफी लेते हैं. ये लो, but कॉफी कम कर दो उसमें. But my body doesn't do well on coffee. Some people do great on it. But if you really have to take it minimally. Don't take it too much. And people with anxiety, stay away from coffee. It's not good for you. Not good for you. एंड चाय, लाइक फॉर मी, आई टेल यू, मैं सुबह चाय के बिना मेरा नहीं चलता है. एक चाय सुबह चाहिए, तो अब उसको, लेकिन ऑब्वियसली मैं पकाती नहीं. बट देन इज इट ऑल्सो हार्मफुल अगर मैं एक चाय दिन में सुबह लेती हूँ? Decrease your milk in that if you can. And put your herbs अच्छे से. Don't take packet वाली चाय. But like put your ginger काट के अच्छे से, इलायची अच्छे से. So उस टाइम तो न्यूट्रिशन वैल्यू जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही बन जाएगा. बट दूध कम कर देना, तो फ्लेवर आएगा आपको अच्छा भी लगेगा. You know, it'll be nicer on your taste. बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते हैं कि हम नहीं रह सकते चाय के बिना, सर दर्द हो जाता है. फिर प्रॉपर जिंजर वगैरह डाल के अच्छे से पियो. बट चाय पत्ती, जिंजर, इलायची एट द सेम पॉइंट टाइम दूध कम कर दो, बिल्कुल कम कर दो. Chai also has caffeine, so there's also stimulant. So we're all just addicted to stimulants in some form or the other. सो आज के एपिसोड में आपसे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. एंड इतनी सारी जानकारी और इतनी सारे मिथ्स, कंसर्न्स हमारी क्लियर हुई है. स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं मेनली, हमारा जो टॉपिक था कि आज के दौर में हम क्या क्या चीज़ें बदल सकते हैं और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं. ये थैंक यू बहुत ज़्यादा हमारे शो पे आने के लिए. एंड वी आर फीलिंग सो गुड आपसे बात करके. अभी हम और सारी जानकारी देना चाहेंगे लोगों को कि अगर सच में आप भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट देम एंड कंसल्ट देम ओवर DMs. फ्री कंसल्टेशंस है. तो मैं सब कुछ हैंडल जो भी है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम यू कैन फाइंड हर एज डॉक्टर तानिया बख्शी, TANIYA. बहुत लोग जानते होंगे बैचलर्स होम्योपैथी के बारे में. इट इज़ all over the country and also out of the country. बहुत सारी जगह. So yes, shift to healthier versions. And yeah, so with that we'll end today's episode. And thank you for coming. We will say हमारे तरीके से. जय श्री राम.